Good evening, friends. I, CA Manoj Lamba, welcomes you all to this very special webinar on using of AI in tax practice, how we chartered accountant, tax practitioner, advocate can use the artificial intelligence in our tax practice. So I request everyone to please join fast so that we can start the deliberations. Meanwhile, everyone is requested to write in the chat box their introduction so that we can know each other. In comment box you can write your introduction. Friends, आजकल हम चैट जीपीटी के बारे में बहुत सुन रहे हैं. Chat GPT is basically a generated pre-trained transformer through which we can do many things. Behind that, there are lot of platforms, there are lot of AIs now available in the market. Lot of players has entered into that market. Recently, you have heard about DeepSeek launched by the China. Same like Meta is there, Gemini is there, Copilot is there, and simply OpenAI has launched ChatGPT. So friends, in today's class, I will discuss with you how we can grow our practice to pan-India basis by using this GPT. How we can become a renowned tax expert. So be with me. I will show you how we can excel our practice. How can we show to the world if we are really a intellectual chartered accountant or really a intellectual and learned advocate. So friend, are you ready for that? If you are ready, please write yes in the chat box. Meanwhile, I am sharing my screen with you. Are you ready? Tell me by writing in the chat box whether my screen is visible to you. Whether my screen is visible to you? Yes. So friends, let's start the discussion. This is a tool which I named Income Tax Faceless Assessment GPT by Manoj Lamba, and tagline given to it is unseen, unbiased, unmatched. एक बात की मैं आपको गारंटी करूंगा कि इस 1 घंटे के बाद जो आज आप अनुभव करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, ना कभी आपने पहले देखा होगा, ना किसी से उसका कंपैरिजन होगा, और ना ही किसी तरह की पार्शियलिटी होगी. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. एक्चुअल में ये जीपीटी है क्या? हिंदी में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग आसानी से समझ पाएंगे. तो जनरली हमारा वेबिनार इंग्लिश में होता है. आज की बात हम हिंदी में करेंगे कि ये है क्या और कैसे हम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, टैक्स प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट एंड द पर्सन who are in the practice of direct and indirect taxes can use these kind of tool to excel their practice. So friends, let's start the discussion. What is GPT? GPT is stand for generative pre-trained transformer. Generative pre-trained transformer. So it is capable of generating replies for you. It can give answer to your queries. आपके सवालों का जवाब दे सकता है. आपके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है. ये आपका एक अपना रोबोटिक्स
टूल हो सकता है। ये वो काम कर सकता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, जो लगता था कि आपको ये असंभव है करना, ये सब कुछ करके दिखाएगा। तो कैसे ये टूल आपकी हेल्प करने वाला है, इस आधे पौने घंटे में हम डिस्कस करेंगे, और कैसे मैं दिखाऊंगा ये टूल काम करता है। तो इट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। दूसरा सवाल लोग जो मेरे से करते हैं कि भैया चैट जीपीटी और इनकम टैक्स फेसलेस असेसमेंट जीपीटी में क्या फर्क है। हर चैट जीपीटी इज ए जनरलाइज्ड जीपीटी, whereas income tax faceless assessment GPT is a customized GPT। एक जनरलाइज्ड है, दूसरी कस्टमाइज्ड है। अब सवाल ये आता है कि जनरलाइज्ड और कस्टमाइज्ड में क्या फर्क है। जनरलाइज्ड भी आपके लिए काम कर सकता है, आपकी क्वेरीज के आंसर दे सकता है, आपके लिए रिप्लाई तैयार कर सकता है, लेकिन कस्टमाइज्ड को हमने अपने ढंग से कस्टमाइज्ड किया है, अपने ढंग के अनुसार ढाला है। जैसे आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय, आर्टिकल असिस्टेंट या कोई मुंशी होता है, तो आप उसे ट्रेंड करते हैं कि मेरे ऑफिस का ये एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में इस तरह से काम होगा और भैया मैं इस तरह से चाहता हूं। तो ये इनकम टैक्स फेसलेस असेसमेंट जीपीटी हमने टैक्स प्रैक्टिशनर, एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक टूल तैयार किया है, जिसके जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को, टैक्स प्रॉब्लम्स को हमने कस्टमाइज कर दिया है, इसे इनकम टैक्स के कुछ सुटेबल डाटा देके, लाइक इनकम टैक्स केस लॉस, लाइब्रेरीज, डाटाबेसेस, इनकम टैक्स रूल्स, फॉर्म्स, जजमेंट्स एंड मेनी मोर। जिसको ये पहले पढ़ता है, इसे पता है कि ये मैं काम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कर रहा हूं, किसी जनरल आदमी के लिए नहीं कर रहा। तो इट गिव मोर स्पेसिफिक, मोर एक्यूरेट एंड मोर ऑथेंटिक रिप्लाई टू योर क्वेरी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जनरलाइज्ड भी काम कर सकता है, कस्टमाइज भी करेगा, लेकिन कस्टमाइज जो करेगा वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा फेथफुल होगा। सेकंड थिंग सर, क्योंकि मेरे इस सब्सक्राइबर बेस को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो मेरी जीपीटी प्री ट्रेन्ड होती जा रही है। एवरी टाइम ए न्यू यूजर लॉग इन टू दैट एंड आस्क ए पर्टिकुलर क्वेरी टू दैट सिस्टम, इट विल गेट मोर ट्रेन्ड। तो बार बार, रोज रोज, हर सेकंड, हर मिनट इसका अनुभव बढ़ता जा रहा है, इसका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, इसका प्रशिक्षण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे मैजिक आपके लिए करेगी जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू माय टॉपिक, व्हाट दिस जीपीटी कैन डू फॉर यू। सबसे पहले हमारे पास समस्या आती है कि भैया एक जजमेंट कहां से मिलेगी। कोई जजमेंट, मेरे को किसी का रिप्लाई देना है, मेरे को जजमेंट फ्रेम करनी है, जजमेंट कहां से मिलेगी। अब जजमेंट ढूंढना अपने आप में समस्या है। फिर आपने जजमेंट ढूंढ ली, वो जजमेंट 100, 150, 200 पेज की होती है, नहीं तो 20-25 पेज की तो आम जजमेंट होती ही है। अब इसे पढ़ेगा कौन, समझेगा कौन। अगर पढ़ भी लिया टाइम लगाकर, आधी बातें समझ आएंगी, आधी बातें समझ नहीं आएंगी। फिर समझ आ भी गई तो इसे रिप्लाई में इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, ये हम नहीं जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं यहीं से कि एक जजमेंट का एनालिसिस कैसे हम इनकम टैक्स फेसलेस असेसमेंट जीपीटी द्वारा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे ये काम करती है। पहले इस पे आऊं, उससे पहले एक बात और आपसे करना चाहता हूं कि जीपीटी से जो आप क्वेरी करोगे उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं साधारण भाषा में। ये प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा एक्यूरेट, स्टैंडर्डाइज्ड और ऑथेंटिक होगा, उतना ज्यादा ऑथेंटिक, साउंड और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आप गेट करेंगे। अब देखते हैं ये होता कैसे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक जजमेंट एनालिसिस करवा रहा हूं, मैं इसे जजमेंट एनालिसिस करवाने लगा हूं। ये मेरा प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट फ्रेंड्स मैंने अपनी मेहनत से, अपनी एनर्जी से डेवलप किया है, और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से काम करता है। जस्ट ए मिनट।
यहां पर मैंने याद करिए प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, आपको पेस्ट हुआ दिख रहा है, एक बार यस लिख दीजिए। अगर ये प्रॉम्प्ट आपको नजर आ रहा है तो आप एक बार यस लिखेंगे। प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है तो यस लिख दीजिए। Any user, please write yes in the chat box so that I can know that you are able to see the prompt. ओके, अब मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा और यहां पर मैं क्या करता हूं सर, इसको एक जजमेंट दे रहा हूं, कोई भी एक जजमेंट से। सर मैंने इसको ये जजमेंट दी एक, और इस जजमेंट के बाद मैंने इसे कुछ नहीं किया, इस एरो बटन पे क्लिक किया। नाउ सी द मैजिक, क्या करने वाला है देखिए सर, एक मिनट वेट कीजिए और देखिए। और ये 35-40 पेज की जजमेंट है और उसका पूरा रस निकाल कर, जैसे हम नींबू निचोड़ देते हैं, आपके लिए परोस देगा और बेहतरीन ढंग से परोसेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या किया इसने आपके लिए। आपने जजमेंट अटैच की, मेरे वाला प्रॉम्प्ट इसको दिया, उसके बाद ये मैजिक कर रहा है आपके लिए, और इसी ही मैं पहले पढ़ के बताने वाला हूं आपको आज। Now, the comprehensive legal judgment analysis ITA 1054 of Bangalore ITAT, this judgment is of 2024. This judgment is completely analyzed. First, it is giving the introduction. In introduction part, it is writing that this appeal involves of so and so client contesting penalty imposed under section 270A of the Income Tax Act for underreporting and misreporting. The key issue involved is so and so. Then complete citation is available for that. This is the case title, this is the court name, this is the quorum, this is the date of judgment, this is the case number, this is the legal representative appeared for the appellant and respondent both. Then summary of judgment. What this judgment is all about. What is the summary of this judgment? It is framing for you. Then it is discussing the issue frame. What are the issues involved in that judgment? Similarly, what argument given by the appellant during the appeal, during the argument, and what contest has been made by the respondent. What are the contentions of the appellant and what are the contentions of the respondent? It is given you in detail. Then decision of judicial pronouncement. फिर ये decision of judicial pronouncement आपको दे रहा है. What legal issue settled by this judgment? It is giving you. Then what are the key takeaways and what legal principle established by this judgment is also provided to you. Then how you practically apply this in the legal practice, ये भी दे रहा है. नोटेबल जुडिशियल ऑब्जर्वेशन क्या थी, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे मेन बात क्या की. The ITIT emphasized that penalty should not imposed mechanically, particularly where legal ambiguities exist before legislative amendment. And what case has been referred by the parties during the argument of this case? All the cases also quoted for that. And what is the evaluation of the judgment? What are the weaknesses and what are the strengths? And now, if someone want to search this judgment on the social media or other platform, what are the key suggested? What are the suggested keyword for future research? It is some keyword it is giving for searching such kind of judgment. And if you want to write some kind of article or interpretation for sharing with your users, what suggested title to give to this judgment analysis? Everything, 14 steps just in one page. 14 kind of interpretation without reading, without seeing, without interpreting. It is doing for you just in 30 seconds.
Now tell me, how many of you say it amazing, wonderful, excellent? How many of you? If any one of you want to say it, wonderful, excellent, amazing, wow, please write in the chat box. Please say in the chat box. Mr. Manish Garg is writing no. What other things? What participants are thinks about that? No one like it? Or anybody like it? Lot of things I have to show you. What things? Only Mokul Lamba is writing amazing. What other things? I want to know from other participant also. No problem. Okay. Thank you, Manish. Now I am seeing some more things to you. Coming back to my prompt section. Now I will show you what further things it can do for you. Some prompts. First, whenever an order has been passed, in this class I will give the demo about appeal to commissioner appeal. Suppose you want to file appeal with commissioner appeal. You want to file an appeal with commissioner appeal. And for that, you have to know the case history of the client. What is the case? सबसे पहले हमारे पास जब भी कोई ऑर्डर पास हो जाता है, असेसमेंट हो जाती है, तो क्लाइंट ऑर्डर लेके आता है, अपनी पुरानी फाइल लेके आता है, उस फाइल को हम थोरली स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली केस था क्या. तो यहां पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, ये मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है और प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद इसको मैं कुछ और चीजें दे रहा हूं. वो चीजें क्या हैं? मैंने इसे ऑर्डर की कॉपी दी, मैंने इसे डिमांड नोटिस की कॉपी दी अंडर सेक्शन 156 और जो कंप्यूटेशन शीट आई है वो दी. ये तीनों फाइल मैंने इसके साथ अटैच कर दी सर. अटैच करने के बाद इसे मैं कहता हूं कि कंप्लीट केस हिस्ट्री चाहिए और बटन मैंने क्लिक कर दिया सर. देखिए क्या होता है. Mr. Prasanna is asking, could you please repeat what you want to repeat, sir? Because the seminar is going on from last 15-20 minutes. What you want to repeat, please tell me in the chat box or a comment box so that I can know that. What portion you want repetition. Meanwhile, I have given the prompt. Now see what it's doing for you. Please see what it has done. It has given all the history of the client. What is the SSC name? What is the PAN? What is the assessment number? What is the original return filing date? Auto-fetched. What is the declared total income? Under which section notice is issued? What response you have to given to the notice? Whether you have filed return under section 148? What replies you have given to notices under section 142.1 and on which date you have replied to 143.2,
on which date you have replied to show cause notice, on which date video conferencing hearing date is there. Every event, every happening of a particular case is just fetched by a click of mouse. Then what are the key disputes in this case? Then what are the procedural aspects we have to challenge? What are the timelines? कब ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुई थी, कब 148 का नोटिस आया था, कब रिवाइज रिटर्न फाइल की थी, कब 142.1 का फर्स्ट रिप्लाई गया था, कब सेकंड गया, कब थर्ड गया, कब शो कॉज नोटिस आया, कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग हुई, कब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ और कब डिमांड नोटिस इशूड हुआ, कितनी इनकम कंप्यूट हुई, कितना टैक्स पेबल है, कितनी इंटरेस्ट और पेनल्टी है, फाइनल टैक्स डिमांड क्या है, पेनल्टी कौन कौन सी इनिशिएट हुई है, अपील में आप क्या क्या ग्राउंड ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 30 डेज में अपील करनी है नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को, अपील करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने क्लाइंट से आस्क करने हैं और कंक्लूजन क्या होगा. I am showing you just in one click everything is on your doorstep. सपोज कीजिए केस हिस्ट्री पसंद नहीं आई तो आप दोबारा इसे कहिए, राइट इट अगेन for me, write it again for me in most elaborated, legalized and impressive manner. दोबारा कहिए इसे, देखिए क्या करता है यार, देखिए क्या करने वाला है. Now see what is happening here. It is not working due to some connective issue. I am giving it again and ask to do it again. Please wait. It is editing the income tax case history for me. I think there is some connectivity issue with Chat GPT. Wait a little bit. It is doing the work. Yes, it is doing the work. Slow, but it is doing the work. Now see friends, complete detail of filing of return and initial compliance, then reopening of course under section 148, then subsequent compliance and notices issued, then key dispute and addition made, then procedural lapses, then timeline of key event, then assessment order and tax computation, then appeal details and legal grounds, then step for appeal filing, then conclusion and relief sought. So it can do everything for you with just a click of mouse. Hope every one of you who is attending this webinar is really liking this tool. If you are liking this tool, I will show many things to you. Please say amazing or wow in the chat box or in the comment box. Is it okay, or it's wonderful, or it's amazing, or it's worst? It is making you fool. What do you think? Write in the chat box. Meanwhile, I am putting another prompt in that.
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर फॉर्म नंबर 35। नेक्स्ट चीज होती है, आपने केस हिस्ट्री ड्राइव कर ली, आपने अब फॉर्म 35 भरना है। और क्या ये आपके लिए फॉर्म 35 भरेगा? देखते हैं सर, देखते हैं सर क्या ये फॉर्म 35 आपके लिए भरने वाला है। इसको मैंने हर प्रॉम्प्ट दिया फॉर्म 35 का, और प्रॉम्प्ट देने के बाद इसे तीनों फाइलें अटैच की, कंप्यूटेशन शीट की, डिमांड नोटिस की, असेसमेंट ऑर्डर की, ओपन किया तीनों फाइलों को। जस्ट फाइलें अटैच हो रही हैं सर, और फाइल अटैच होने के बाद इसे कहा कि भैया फॉर्म 35 बना के दे दे मेरे को, क्या जानकारी चाहिए फॉर्म 35 के लिए। प्री फिल्ड फॉर्म 35 आई वांट। देखिए सर, प्री फिल्ड फॉर्म 35 इज रेडी फॉर यू। Complete form 35 is ready for you, sir. Now I ask it to prepare in tabular form. Please provide the above output only in tabular format. Please see what happened. See, please. Today server is a little bit slow, but it is working for you. Many information, basic information provided in a columnar form. Otherwise, it is unable to make column due to the connectivity issue. Otherwise, it will make for you. So it is capable of providing information in tabular form as exactly you want it. Just copy and paste it. Every detail is pre-filled. Name of the applicant, permanent account number, address, status, assessment number, phone number, email ID, DIN number, section, and amount of addition, under which section appeal is to be preferred, what grounds has to be taken. Everything it is providing to you. Now see next prompt. Hope how many of you are really liking? Manish Karag is saying amazing. Chamanlal Agarwal ji, amazing. Vettugani, revolutionary. Very nice, very nice. Everyone is doing the great things. Friends, now I am showing you the next, giving it next prompt. I am giving it next prompt, my dear friends. And next prompt is about drafting of statement of facts. Result oriented drafting of statement of facts. I am giving the prompt. I have given the prompt for writing statement of facts. Again, only these three files. And ask it to prepare statement of fact for me. Now see what will happen.
Please provide me the complete detail of statement of fact of this case in most elaborated and most impressive manner, most elaborated and most impressive manner in plain text only, because it is giving it in tabular form. See what is happening now. Now, see, complete statement of fact for income tax appeal is ready for you. Please provide me two different format of statement of fact so that I can choose one. अब मैं ये कह रहा हूं 2 सेट दे, अलग अलग तरह के दे, ताकि मैं एक चुन पाऊं. देखिए सर, everything is ready for you. No need of any typist, no need to read the notices, no need to do anything. Furthermore, महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में. आपके पास कोई लास्ट डे को भी आ रहा है तो आप इस पोजीशन में हैं कि उसकी एक इफेक्टिव रिप्लाई ड्राफ्ट कर कर उसकी अपील फाइल कर पाएंगे. डिटेल ग्राउंड ऑफ अपील इज देयर, every relief is there. Hope every one of you are liking that. You are liking that or enjoying the session. I have to show so many things to you. Mr. Pakhanna is writing liked. And what about others? Only Mr. Pakhanna is writing like. What about Mr. Manish, Mukul, Chaman, and other participants? Meanwhile, I am giving the next prompt to my GPT. Now I am asking it to prepare grounds of appeal, which is the most important part of our appeal. Prepare most impressive ground of appeal in this case. I have copied the prompt, put it in the GPT, attached 3 basic files, open that files, and ask it to prepare most comprehensive ground for appeal. Meanwhile, I am seeing you, okay? Mr. Gattu Gyani is saying, I want to instantly buy this. How to buy? सर प्लीज वेट, बताएंगे लास्ट में. इतनी जल्दी भी क्या है खरीदने की.
Now see meanwhile what is happening in my GPT. Meanwhile, I am reading the comment. In the same time, the complete grounds of appeal is ready. First, general grounds of appeal, then specific ground challenging the additions, then procedural lapses, then challenge to penalty proceeding, then relief served. Please redraft the grounds of appeal in most legalized, impressive, and elaborated manner. See, Mr. Chamanlal Agarwal is writing, it is very useful, Lambaji. Thank you so much. Thank you so much, sir. See, sir. Now it is elaborating the grounds of appeal. So please see the entire pre-drafted grounds of appeal with every pre-filled detail. General grounds, specific grounds, procedural lapses, violation of natural justice, challenges to the penalty proceeding, relief sought, prayer, everything is ready. Everything is ready. Now I am giving the next prompt to it. Next thing is to prepare detailed covering letter come petition request. Detailed covering letter including petition request. Paste and ask it to prepare. This time I have not attached file because अब तक ये ट्रेंड हो चुका है, अब इसे फाइलों की भी जरूरत नहीं. जानबूझ के मैंने फाइलें नहीं लगा के दिखाई सर आपको. अब इस बार मैंने फाइलें नहीं लगाई हैं सर. देखिए फिर भी पैन नंबर भरा जा रहा है, डेट असेसमेंट ईयर भरा जा रहा है, सेक्शन भरा जा रहा है, ऑर्डर के सेक्शन में पास हुआ था, डिन नंबर क्या था. मैंने कोई फाइल नहीं लगाई सर अब, क्योंकि ये हमारी पास्ट हिस्ट्री को पढ़ रहा है और सारा कुछ मेरा बता रहा है. Complete petition request along with all the essential requirement of petition request letter is ready to use for you. Ready to use, ready for you. Everyone is liking that? So friends, start using technology, start adopting technology in your practice. Your practice will really excel, really boost. One of its kind tool in the market, Mukul Lamba is saying. Yes, Mukulji, it is really innovative tool. Now you see entire petition request letter on the letterhead of the appellant. Date, to whom it is addressed, what is the subject, what the address, SSC detail, what is the essential case detail, what is the brief background of the case, what are the key dispute, just in 2 pages, what enclosures submitted with the appeal, what is the prayer, everything in brief. Now I am giving it another prompt. Judgment analysis we have already done. Now next prompt is for submitting additional evidence. Suppose during the assessment proceeding, you want to submit some additional evidence.
under Rule 46A, because it is the right of the SSC to submit additional evidence during the course of appeal. But for that, you have to write a letter. You have to make a request for admission of additional evidence under Rule 46. How to write this letter of additional evidence? Ready-made letter is ready for you. Just with a click. Now I'm again not attaching the file. Submission of additional evidence under Rule 46 in appeal under Section 246A to the Income Tax Act. Getting my point? Now tell me how many of you is liking it. Similarly, my dear friend, you can do the entire assessment tax. How to reply 142.1, how to reply 143.2, how to seek video conferencing facility, how to seek adjournment, how to reply to the show cause notice, how to reply the variation proposed, how to find the relevant judgments, how to challenge the assessment order. Getting my point? Everything it can do for you. The entire assessment, first appeal, and even the second appeal work can be handled by this GPT. This GPT is capable of doing your entire faceless assessment work and faceless appeal work and appeal to tribunal also we are introducing very soon. Appeal to tribunal we are also introducing very soon. So friends, you are seeing that how amazing this tool was. How amazing this tool was. So meanwhile, the complete additional evidence letter is ready for you. Complete letter is ready for you. With what documents you are attaching it? Copy of bank statement, purchase agreement, registered deed, independent valuation report, financial statement, balance sheets, affidavit and supporting document, assessment order, demand notice, whatever document you are attaching with this 46A is available for you. Next prompt, I want to give it. Now, I want a list of favorable judgment in this case. You want to put some favorable judgment assessing in your issue also. Okay, in every case, the situation is different and you want a complete list of judgment favoring you. So here I have given a prompt to provide some judgment favoring assessee, favorable to assessees. Please see what is happening. Its written submission prompt is also available. Mr. Manish Garg is writing. Sir, it is in two versions. Version 1, version 2. If you buy version 1, prompts are not available. If you buy version 2, Manishji, only then these ready-made prompts are available to you. All 25 prompts. More than 25, you can say. Getting my point? If you then no prompt is available to you. If you buy version 2, only that prompts are available to you. Meanwhile, see complete list on different issues. On every grounds you have taken in the appeal, it is providing you the case laws with complete citation. Getting my point? How many cases it has provided to you? CIT versus K. Chintaramban, CIT versus Dinesh Jain HUS, CIT versus Nangla Fibras, PCIT versus Meeta Goteya, Bajrang Traders versus ACIT. Lot of judgment. Or further, if these judgments are not suiting you, not suitable to your particular case, not identical to the case facts in your case, then you ask it again. Ask it to provide more relevant judgment. It is all again the game of prompt. How effective the prompt you are giving, how the same reply it is giving more effectively. Getting my point? So ultimately prompt का game है. Standardized prompt is very most important in that. तो आपने इन हर चीजों को देखना है. एक लास्ट में मैं आपको और देता हूं कि हमारे
कमिश्नर अपील साहब हमेशा ये कह देते हैं कि भैया हमें तो पेपर बुक बना के दो, इतना लंबा केस हमें समझ नहीं आता। तो सर क्या आपके पास पेपर बुक बनाने का भी कोई प्रॉम्प्ट है? सर है, और जो प्रॉम्प्ट नहीं है और आप लोग कहेंगे हम उसको भी बना देंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको जो नए प्रॉम्प्ट आएंगे वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सर। तो ये मैं आपके लिए पेपर बुक बना रहा हूं सर। ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया एंड प्रॉम्प्ट मैंने यहां पेस्ट किया कि भैया पेपर बुक बना दीजिए। देखिए क्या करता है। अब पेपर बुक बनाने को कहा है सर मैंने इसको। पहले इसने खाली प्लेन डिटेल भर दी, डिन नंबर भर दिया, डिमांड रेस्ट भर दी। अब देखिए इंडेक्स ऑफ बुक इन पेपर फॉर्मेट इज रेडी फॉर यू। पेज नंबर आपको चेंज करने हैं, बाकी सारा काम आपको कराया दिया जा रहा है। टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सेम, जस्ट पेस्ट ऑन द फाइल एंड अरेंज द डॉक्यूमेंट इन दैट नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? complete paper book including complete index and section. Impressive one. It is not a simple paper book, it is an impressive paper book. I will show you what kind of paper book it is preparing for you. Getting my point? Here SSC detail, here index of paper book divided into three sections, section 1, section 2, section 3, and again the elaboration of all these sections, then submission and prayer. So it is capable of preparing paper book also for you. Manish Garg is writing very impressive. Sir, in last, अब आपको ये लगता है सर कि भैया लांबा जी ने बहुत पढ़ा दिया, बहुत सिखा दिया। जो जीपीटी ने रिप्लाई बनाया, अगर ये रिप्लाई में एज इट इज सबमिट कर देता हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट दे देता हूं जो जीपीटी ने बना के दिए, तो कितने % चांसेस है मेरे केस में फेवरेबल आउटकम आने के? पूरे बाजार में, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा टूल नहीं है जो ये बता दे कि कितने % चांसेस लगते हैं इस केस में फेवरेबल आउटकम आने के। ये आपको बताएगा और सब्जेक्ट वाइज बताएगा। लास्ट प्रॉम्प्ट मेरा सबसे बड़ा मैजिक है, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो मैं आपको दिखाऊंगा सर। ये मैंने दिया इसको प्रॉम्प्ट, जजिंग द चांसेस ऑफ फेवरेबल आउटकम इन माय केस। Judging the chances of favorable outcome in my case सर। ये मैंने दे दिया सर, इसको कहा कि फेवरेबल आउटकम के चांसेस बताओ। देखिए सर, अपील आउटकम स्ट्रेटजीज। क्या आपने ओवरव्यू और की इश्यूज थे? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है केस की? आपके स्ट्रेंथ क्या है जिन पॉइंट में आपने टच किया? व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर केस? क्या स्ट्रेंथ बनेंगी? अब ये भी बताएगा क्या वीकनेसेस है, आपके केस में कमियां कहां हैं। ये हर स्ट्रेंथ बता रहा है जो मैंने बनाए। अब वीकनेसेस भी बता रहा है कि सब कुछ प्रूव आपको कहेगा, कहने से कुछ नहीं बनेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एसएससी, रिस्क ऑफ एनएससी ही रिजेक्टिंग एडिशनल एविडेंस और लाइकली ऑफ फेवरेबल हाई कोर्ट। देयर आर हाई चांसेस but based on procedural lapses, case laws and available evidence, the chances of success is, just a minute, I am showing you. I am showing you, sir. Judging the chances of favorable outcome and detailed strategy for appeal. केस ओवरव्यू एंड की इश्यूज पहले बताए इसने, फिर केस की स्ट्रेंथ बताई, फिर वीकनेसेस बताई, फिर फेवरेबल आउटकम क्यों आएगा आपके केस में उसके कारण बताए, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये सारा कुछ बताया। कैसे लगाना है वो बताया, कैसे बताना है वो बताया, और क्यों मैं कह रहा हूं कि फेवरेबल आउटकम के हाई प्रोबेबिलिटी है, उसके रीजन क्या है वो है, और आपको फाइनल रिकमेंडेशन वर्ड्स क्या है ये भी बता रहा हूं। और अब मेरा एक लास्ट प्रॉम्प्ट जो आपको नंबर दे के बताएगा
कि किस चीज पे आपके रिप्लाई में कितने नंबर हैं, आपकी रेलेवेंस कितनी है, आपकी क्लैरिटी कितनी है, आपके केस क्लास में कितनी जान है, सारा कुछ मैं इसको दूंगा और फाइनल आउटकम इसी से चाहूंगा। हर लास्ट प्रॉम्प्ट मेरा देखिए, ये उससे भी बड़ा मैजिक है। ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया और सर कहा बता दो। ये नंबर दे के बताएगा एक टीचर की तरह आपको। देखिए सर, रेलेवेंस के मेरे को 5 में से 4 नंबर, क्लैरिटी के 5 में से 3 नंबर, लीगल स्ट्रेंथ मेरी में बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे केसेस दिए हैं, 5 में से 5 नंबर। जो मैं एविडेंस दे रहा हूं 5 में से 4 नंबर। प्रोसीजरल लैप्सिस पे मेरे को 5 में से 3 नंबर। स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन में मेरे को 5 में से 4 नंबर। टोटल मेरे 30 में से 23 नंबर। 76% चांसेस हैं कि इस केस को मैं अपील में जीत जाऊंगा। और स्ट्रॉन्ग करना है तो स्ट्रेंथ मेरी क्या है और इसे मैं फर्दर इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, अपने नंबर फर्दर कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, ये भी बता रहा है। और लास्ट में कंक्लूजन भी दे रहा है दोस्तों। तो इसके बाद सर ये मेरा अब स्टॉप शेयरिंग है। अब स्ट्रीम यार्ड में मैं आपके साथ आ चुका हूं। अब आपके क्वेश्चंस के लिए मैं अपना टाइम स्पेयर करता हूं। बचे हुए 7 मिनट हमारे पास हैं। किसी भी व्यूअर का, किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और एक बार नहीं तो अगर क्वेश्चन नहीं है 2 मिनट तक हम वेट करेंगे। मुकुल आपको एलोबरेट कर देगा कि हाउ टू बाय इट। मुकुल इज विद मी, ही विल guide you how to buy it. I am waiting for a question for a minute. Otherwise, Mukul will elaborate about the both version and how to buy it. Hello everyone. Hello everyone. I have placed the links in the chat section also. And if you want to directly buy, I am showing you the way that how you can buy this revolutionary GPT. Just sharing my screen. So you have to go to our website, that is www.bizgyan.com. You open the website and at the top here this is GPT store. You have to click on this GPT store and you will find various GPTs here. This is the version 2 GPT that CM Manoj Lamba sir was showing you. This is income tax faceless navigator GPT. With this GPT, we are offering you the free prompts that, like sir told, 25 plus free prompts are there with this GPT. So you have to go to www.bizgyan. Here come on the GPT store, and for the existing users who are already having version 1, they can upgrade from this link. And for new users who want to buy, they can buy through this buy now button. In the early bird offer, we are offering a flat 50% discount. That is, it is priced as 10,000. But for the first 100 users, we are offering it at only 4,999. And for the version 1, which is the same as this version only, which sir was using, but in this version, we are not providing with the prompts. You yourself have to apply your professional judgment and create your own prompts, but the functionality remains the same. It will definitely answer you in a better way. But if you want to get prompts along with GPT, you have to buy this version 2. But if only the GPT tool is required and you can yourself manage the prompts and you want to firstly take the demo that how it works, you can go with the version 1. So this is the way. Clicking on the buy now button, this page will open. After making the payment, come on the same page and click on this link button. The link button is given here. After you make the payment, again come on the GPT store, open this GPT, click on link button here, and you will get the link to GPT. So this is the simple way you can buy the GPT. All the other detail and prompts will be shared on your email after purchase within 24 hours. So this is the website, and I have also placed the direct link to buy in the website in the chat section only. So from directly there you can buy also. So this was the basic.
explain that how you can buy the GPT. So I think this is all from our side. There are no more questions. So we shall wind up the today's session. And once again, thank you everyone for their valuable time and CA Manoj Lamba sir for this amazing webinar and showing the demo of this revolutionary AI tool that is working in income tax faceless assessment and appeal procedures and helping many professionals around India, around North region. And you can also benefit from this AI tool and streamline your professional advocate practice or chartered accountancy tax practice. So this was all from Bizgyan. Thank you everyone for joining us this evening. I am also writing the email. If you have any query regarding this GPT, you can also email us at bizgyan@gmail.com. We will also solve your query there. So thank you everyone for being with us on this evening. Thank you everyone. Jai Hind. Bye bye. Vande Mataram. Thank you.